So think about it, and let's take some physical example to make it easier for us. Let's say that we have the eyes, जिससे हम देखते हैं. Why can we not see at the night time when it's dark? If we have eyes, we should be able to see all the time. But why can we not see when it's dark? Meaning, it's not just the eyes. It is also the light that requires for our eyes to see. पता चला कि ये आय का कमाल नहीं है कि हम देखते हैं. वो किसका कमाल है? लाइट का, कि हम देखते हैं. ठीक है? Now let's turn the table around. There's a daytime and there's a light, but we don't have eyes. Then what happens? We still cannot see. We still cannot see. So पता चला कि it requires two. Eyes भी और रोशनी भी for us to be able to see. It requires two. So the light, the nur of Imam, is required for our eyes to see. Because with these eyes that we have, without the nur of Imam, we will not be able to see. Or this example. Doesn't all 1.2 billion Muslims read this Quran? Why cannot they see what we see in it? They know the Arabic, they know the language. Why can they not read this Quran the way we read and see? पता क्या reason है? No. They have the eyes but no light. And माफी के साथ, with the most humbleness, sorry, we have a light but no eyes. तो हम भी वही है अंधे जिस तरह से वो अंधे हैं. Until we open our eyes, until we accept His light. So when you have both, then you can see. आ जाए हम अपने किस्से के अंदर वापस. तो इमाम जब हमारे आलम शख्सी में, हमारे पर्सनल वर्ल्ड में, when he walks on this spiritual journey, then he sees what in us. वो क्या देखता है हमारे अंदर? सबसे पहले वो ये देखता है कि ये मोमिन कि जो अभी अभी जिसके अंदर मेरी तशरीफ आवरी हुई है, वो कीचड़ की तरह है या मट्टी की तरह है. Remember, if he's a mu'min, he will also get to the level. पर यहाँ पर जो एक मसला है ना, the biggest problem that we have at this point is what? मट्टी जो है वो सिर्फ मट्टी है. It requires water ताकि वो कीचड़ बन सके. आज ही हमने सुना कि एक खेत है बाहर, farm, and the farmer goes out and irrigating the land, and he does that year round. At the end of the year, will he see any flowers, any weeds, any rice, or any kind of vegetation? Any crops? Any crop? No. Why? He's working so hard, irrigating the land. Ibadat is that machine which irrigates the land. So you prepare your land for that, but then it requires what? Water. Thank you. It requires rain, rain water for the land. So let's say कि बारिश आ गई. At the end of the year, will he see any vegetation? Again, no. Why? He did his part. He worked hard irrigating the land. Allah did his part. It rained, water, still no vegetation. What happened? What did he forget? Seeds. Seeds.
Seed is the Isme Azam. So without this seed, so let's go around other way. You receive this Isme Azam. You have the seed in your hand now. But your land is not fertilized, is not prepared, and there's no rain. What are you going to do with the seed? The reason I'm bringing all this out, so we know where we stand. Are we standing with the seeds in our hand? Are we irrigating the land without the water and the seed? Or we have the land and the water but no seeds? What are we missing? But in this moment, Zulkarnain, the Imam, says that this moment is ready. इसकी ज़मीन जो है वो prepared है, पानी के साथ prepared है, हमवार है, is ready to be cultivated, ready to give some vegetation. कि यहाँ पर कुछ उगे, तो वो हमको इसमें आज़म देता है, seeds देता है. So let's see, now we have three things: the land, the knowledge, and the इसमें आज़म. अब वो इसमें आज़म को अपने हाथ में रखा है, हम कभी भी लैंड में नहीं डालते उसको, फिर क्या होगा? Still nothing will happen. So we take this इसमें आज़म but we never practice. Never practice. तो क्या होगा? तो भी काम नहीं चलेगा. Do you see कि कितना अलग अलग steps चलते हैं? But if we don't think like that, अगर हमारी ये सोच नहीं है, and we think that because I'm a Ismaili and I have an Imam and I will go and get the Isme Azam, तो मेरा काम हो जाएगा. लेकिन पता चला it requires more than that. It requires steps. First step was to cultivate your land. Second step was to get some water. The third step was to get the Isme Azam. And the fourth step was उसको उसके अंदर डालना. There were steps that had required us to follow. अगर हमने fourth step से शुरू किया है, so okay, we have the Isme Azam. Now we understand we have the land. We start to cultivate that. And we started to pour the water in it, the knowledge. And we have the seeds. We go ahead and put that into the land and start practicing ibadat. तो इस जगह पर इमाम जब हमारे अंदर आता है, when he comes into our आलम शफ़ी, at the time कि जब हम successful हो जाते हैं, so Imam starts his journey in us when we get to that fine point at the junction of those two rivers. When we get to that point, इमाम जो है वो हमारी कश्ती में आके बैठ जाता है. And then he does his part and we remember those steps the Imam takes. But अब यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है वो मूसा की स्टोरी के इस एंड के अंदर है, at the other end, कि जहाँ पर मूसा को सब तावीलात बता दी गई थी. When we understand all those things, that how Imam helped us kill our pride, how Imam helped us kill our carnal soul, and how Imam had shown us the treasure of the Imam and the Pir. यहाँ से ये कहानी शुरू होती है. यहाँ से ये कहानी शुरू होती है. So what happens at that junction in Ruhaniyat? Because our eyes are open now, हमारे रूहानियत का जो पर्दा है वो हट गया है, हमारे बातिन का पर्दा हट गया है. The veil has been removed from our batin. We are able to see things that we could not see before. तो
तो क्या होता है, अभी हमारा तो पर्दा हट गया। अगर हमको इस जिंदगी में रहना है, इस दुनिया के अंदर रहना है, और अभी भी हमको एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, एंड रिमेंबर व्हेन आई से नॉर्मल लाइफ is not going to be as normal as it was yesterday. This is a new norm from then on. आप समझ रहे हैं? इधर दोबारा से सुने, ऐसे अगर आपको नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, this is not the normal life that we had yesterday. This is a new norm from then on. एक अजीब और गरीब किस्म की नई नॉर्मल जिंदगी हम का आगाज होता है फ्रॉम दिस पॉइंट। और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए what do we need? We need that veil that is removed, or the wall that was broken needs to go back up. वो दीवार को दोबारा लगानी होती है। क्यों? कि हमारी आंखें खुल गई है, हमारे कान खुल गए हैं, हमारे सेंसेस खुल गए हैं। Now we hear and see everything that is going on around us. That would be just too much. It's like turning on your TV at the loud 100 sound. You will not be able to think, sleep, or do anything. So what do you need to do? You need to turn off your TV. And then when you wanted to watch again, what do? You turn it back on. चलो इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं। सो इस गांव के लोग, कौन से गांव के लोग? हमारे अंदर, ये हमारा गांव है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी रूह है, ये हमारे लोग हैं। वो इमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि या मौला तू मेरे लिए इस दीवार को दोबारा खड़ी कर दे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, the word is used is याजूज व माजूज, गोग और मगोग। वहाँ के जो लोग हैं, कौन वहाँ के लोग? यानी कि आउटसाइड की जो रूहें हैं, बाहर दुनिया के जो लोग हैं, अब वो हमको बहुत तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? किस तरह तंग करते हैं? बिकॉज वी कैन हेयर एवरीथिंग, वी कैन सी एवरीथिंग। वो हमको बहुत तंग करते हैं। आई कैन नॉट लिव माई नॉर्मल लाइफ, कैन यू पुट दिस वॉल बैक अप? और इमाम भी बड़ा नटखट है, वो भी बड़े ड्रामे करता है। वो क्या बोलता है? हाँ हाँ अभी कर देता हूँ, या गिव मी जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, आई विल डू इट फॉर यू। एंड व्हाट डज ही डू? व्हाट डू ही आस्क यू टू डू? वो क्या बोलता है कि तुम अपने अंदर इश्क की आग, अपने नूर की आग को तेज करो, और तेज करो, और तेज करो। एंड देन ब्रिंग मी सम आयरन, उसको भी उसमें मेल्ट कर डालो। अब और चिखते हैं, चिल्लाते हैं कि मौला जल्दी कर। बोलते मैं तेरे साथ हूं ना, व्हाई यू वरीड, आई एम विथ यू राइट, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं दीवार खड़ी करता हूं। व्हाई डज ही डू दैट? व्हाई वुड ही प्ले दिस गेम विद अस? क्योंकि ये रूहानियत का मकाम बहुत ही मुश्किल, टफ होता है, और हम चाहते हैं कि एकदम से जल्दी से हम अपनी आंखें बंद कर लेवे, जल्दी से हम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तूफान आया होता है रूहानियत का, और इसको बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं होती है। बट ही वांट अस टू वॉक थ्रू दिस फ्लड ऑफ वाटर, ही वांट अस टू वॉक थ्रू दिस स्ट्रॉम ऑफ रूहानियत, ही वांटेड टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। जस्ट लाइक दैट मदर, कि जब बच्चा बोलता है कि अभी मैं गिर जाऊंगा और रोता है, तो इसकी माँ क्या बोलती है? थोड़ा और चल बेटा, 2 more steps, I'll catch you, 2 more steps, I'll catch you. क्यों? मदर वांट द चाइल्ड फीट टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी और हमेशा उसको उठा के चलेंगी, तो बच्चा तो कभी भी चलना नहीं सीखेगा। When will he learn how to walk? What does mom do? 1 more step. Come on, 2 more steps. फिर वो साइकिल चलाना सीखता है, तो बोलता है ओ नो, होल्ड मी, होल्ड मी। हम साइकिल चलाते हैं, अभी मैं गिर जाऊंगा,
यूँ होते हैं, यूँ होते हैं। एंड वो क्या बोलती है, डोंट वरी अबाउट इट, आई गॉट यू. But if you look at the video of them, they are not even holding it. They are telling you they are holding it, but they don't, because they want you to learn how to ride the bicycle. यही इमाम यहाँ पर हमारे साथ करता है. He wants us to become strong in the रूहानियत. But वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दीवार खड़ी कर दूँ तो मैं खड़ी करूँगा. वो प्रॉमिस करता है हमको, और वो भी करता भी है, दीवार को खड़ी करता है. लेकिन क्या करता है, किस तरह से करता है? वो कहता है कि आप अपनी इबादत से, अपने इसमें आज़म से, यहाँ पर जो कोड वर्ड यूज़ किए गए हैं कि आप अपनी आँख को और फूंकें. आपको पता है छोटी सी आँख होती है, करते हो तो बड़ी हो जाती हो, उसको दौंकना बोलते हैं. उस आँख को और स्पार्क करें, और बड़ा करें, और तेज़ करें, और गर्म करें, और बड़ी करें. ये जो फूकना है ना, ये इसमें आज़म है अपना. वो इमाम फरमाते हैं कि आप अपने इसमें आज़म को और तेज करें, और तेज करें. डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप. और तेज करें अपने इसमें आज़म को, और तेज करें. एंड ही इज टेकिंग यू ऑन टू दैट स्पिरिचुअल जर्नी. और उस स्पिरिचुअल जर्नी की पीक पर आकर वो हमारे लिए एक दीवार बना देता है, एक दीवार बना देता है हमारे ज़ाहिर और बातिन के बीच में. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रूहानियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है. और आप देखें इसी मकाम पर उस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा होता है. ऑन द वॉल ही पुट्स वन डोर. और फरमाते हैं कि इस डोर के इस तरफ जो है वो खैर है, इस तरफ जो है वो शर है. और द एग्जाम्पल आई गेव वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द टीवी. उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है. क्या दे देता है आपको? रिमोट कंट्रोल. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, whenever you're ready to go back to the Ruhaniyat, whatever you want to learn and see and hear, only thing you have to do is what? Use your Isme Azam and the door will open to the Ruhaniyat. अब वो मेहनत बाकी नहीं है, वो मेहनत नहीं है जहाँ पर आपने पैसे कमाए, टीवी जाके खरीदा, मेहनत से उठा के लाए, इंस्टॉल किया इधर. There's no more labor. Only thing you have to do is what? Click on the remote control और टीवी ऑन हो जाएगा. Because you have achieved those goals, अब आपके पास वो इसमें आज़म है. आपका इसमें आज़म वो काम करता है कि जब भी आप इसमें आज़म पढ़ते हैं तो कितनी मर्दा पढ़ना होगा. पहले इमाम ने बोला तुमको इसको और तेज करो, और तेज करो, और तेज करो. कितनी तेजी से हमको कितनी मर्दा इसमें आज़म पढ़ना पड़ा होगा. लेकिन अब ये डोर खोलने के लिए कितनी मर्दा इसमें आज़म पढ़ना पड़ेगा आपको? क्लिक, एक मर्तबा, राइट? यू विल से इसमें आज़म वन सिंगल टाइम एंड द रूहानियत के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए. और जब आप वो हासिल कर लेंगे जो आपको हासिल करना है, यू विल अचीव वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड. क्लिक, यू विल क्लोज द डोर, ताकि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें. यहाँ पर एक दो और चीज़ को मैं ऐड करता चलूँ, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारे ज़ाहिर और बातिन के बीच में एक पर्दा है, एंड आफ्टर दिस में आज़म we are removing this the veil. If I tell you that there is no veil between our physical and batin, what would you say to that? Actually, at the beginning, there is no wall. Only thing
that's lacking from us to seeing on the side is our eyes. Remember the example? Because our eyes are closed, we cannot see on the other side. जब हमारी आंखें खुल जाती है तो वो सब कुछ नजर आने लगता है, which was there from the beginning. It was always there. The batin and the ruhaniyat and the miracles of the ruhaniyat were always and always present there. Because our eyes were closed, we could not see it. And now, because our eyes are open and the nur of Imam is there, we can see everything. अब हमें दीवार की जरूरत पड़ गई. अब हमें दीवार की जरूरत पड़ी. पहले दीवार की जरूरत नहीं थी. क्यों? कि हमारी आंखें बंद थी. दीवार बाद में खड़ी की जाती है. आप दोबारा को गौर से पढ़ना घर पे जाकर. 18 नंबर की सूरा है, 83 से किस्सा शुरू हो रहा है. और देखें कि दीवार नहीं थी पहले, बाद में खड़ी की गई थी, ताकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी को जी सकें. तो इमाम अपनी नजरों से जो देखता है, और द कॉन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन द मोमिन एंड द इमाम, वो यहाँ पर हमको नजर आता है कि हमने क्या देखा था और इमाम क्या देखते हैं हमारे अंदर, और इमाम क्या क्या काम करते हैं हमारे अंदर रहकर, और किस रूहानियत के मकाम पर जाकर हम इमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि या मौला अब तू इस दीवार को खड़ी कर दे. लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारी रूहानियत ख़त्म हो गई. हमको वो पावर दे जाता है कि जब भी आपको कुछ समझना हो, कुछ सीखना हो, कुछ देखना हो रूहानियत की साइड पर, तो आपके पास ये कंट्रोलर है, ये रिमोट कंट्रोल है आपके पास, आपका इसमें आज़म है आपके पास. आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो दीवार, वो दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से आपको जो हासिल करना हो वो हासिल कर सकते हैं आप. आयत नंबर 97 से शुरू होता है जी. सूरह नंबर 18 आयत नंबर 97 से जुल्करनैन का कंटिन्यू किस्सा. तो थोड़ा पढ़ना तो चला है. ओके. तो जैसे हमने बात की कि आग को दहका, उसके बाद हत्ता कि जब बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा. याजूज माजूज इस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे. इसमें नकब लगाना इनके लिए और भी मुश्किल था. जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको ढा देगा. मेरे रब का वादा बरहक है और उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे कि एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और सूर फूंका जाए, और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे. और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थे. रिपीट दैट अगेन. वो लोग जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थे. तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना ले? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है. फिर जुल्करनैन का किस्सा ख़त्म है अभी, और आगे वो कहाँ पर है? और ये अमल ज़ाया करने की अच्छा. ए नबी, इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएंगे कि अपने आमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम व नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और जहद राह रात से भटकी रही और वो समझते रहें कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और उसके दीदार का यकीन न किया, इसलिए उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए. क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न न देंगे. इनकी जज़ा
जहन्नम है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया, और इस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयत और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जीना चाहेगा। ए नबी कहो कि अगर समंदर में मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बनाई जाए तो वो ख़त्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना होंगी। बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो भी वो किफ़ायत ना करे। ए नबी कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा, मगर मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। On that day we shall present hell to the disbelievers plain to view. Those whose eyes were hoodwinked from my reminder and who could not bear to hear. Do the disbelievers think that they can take my servant as protectors besides me? We have prepared hell for the disbelievers' entertainment. Say, shall we inform you who will be the greatest losers by their works? Those whose efforts go astray in the life of the world, and yet they reckon that they are doing good work. Those are they who disbelieve in the revelations of their Lord and in the meeting with Him. Therefore their works are vain, and on the day of resurrection we assign no weight to them. That is their reward, hell, because they disbelieved and made a jest of our revelations and our messengers. Lo, those who believed and did good works, theirs the garden of paradise for entertainment, wherein they will abide with no desire to be removed from thence. Say, though the sea become ink for the words of my Lord, verily the sea would be used up before the words of my Lord are exhausted, even though we bring the light thereof to help. Say, I am only immortal like you. My Lord, inspire in me that your God is only one God. So whoever hope for the meeting with his Lord, let him be righteous work. Let him do righteous work and make none share of worship due unto his Lord. तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हम रोकते हैं इसको ताकि सवालात का मौका हो। तो इंशाल्लाह यहाँ पर सवालात भी होंगे और इसके जवाब की भी कोशिश की जाएंगी। या अली मदद।